वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जो कि हर एपिसोड से पहले मैं ये कह रहा हूँ लोहा वाली ट्रिप पे, बट अगेन बट ऐसे हम सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, हमारा टाइप नहीं हो सका। लास्ट टाइम हमने मार्च में करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, कंटेनर्स आ गए, वी कुडंट टेक दैट ट्रिप। फिर हमने फिर से करने की कोशिश की, फिर कंटेनर्स आ गए, बट दिस टाइम वी मेड श्योर दैट वी लीव इस्लामाबाद। बट द गेस्ट वी हैव टुडे विद अस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट because he's going to drive a ton of views. I'm very happy. There's going to be a lot of dollars coming my way. It's one of the biggest creators in Pakistan, Shahveer Jafry. मैं अकेला था. Okay. Shahveer bhai, how are you? Very good, Muzammil bhai. Thank you so much and very pleased to be on here. I've been looking forward to speaking to you for a very, very long time. Even the first time when you invited me, I got very happy, but containers, unfortunately. अभी भी वही situation है, हम वहीं खड़े हुए हैं, कुछ move नहीं हो रहा, but इस बार एटलीस्ट आपका शहर साफ है। हमें टेंशन है कि इस्लामाबाद का पता नहीं क्या सीन। लेट्स होप कि हम वापस पहुंच जाएं। बट आई हर्ड यू जस्ट गॉट बैक फ्रॉम सिंगापुर. Yes. What was that all did about? This morning. So basically, YouTube's Creator Summit, YouTube's official Creator Summit, they recognized Pakistan for the first time. And I, along with my cousin Sundas, who is my podcast host, and Ducky, us three were representing Pakistan in Singapore, which obviously came as a surprise to me that I was selected in the first place. But they said, "Hey, come over," and it was amazing, man. It was really, really nice. होता क्या क्रिएटर समिट में? बेसिकली क्रिएटर समिट में ये होता है, यूट्यूब अपने जितने भी रीजनल क्रिएटर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, इंडिया से, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, इन सबको बुलाता है और कहता है कि यार आप लोग हमारे लिए इतना काम करते हैं, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो दिस इज़ आवर वे ऑफ showing you love and giving back to you, and also this is one way of you meeting one another, right, cross borders, collaborative and उस तरह से. Exactly. And also this is we're going to share a ton of information with you, what is new out up and about coming on to YouTube very, very soon. So there's a lot of things that I have and I could share with you based on if you want to hear them in privacy or on camera. वो आपके ऊपर depend करता है. I mean, I would love to hear them on camera. Sure. Because you know I'd like to have everyone. Absolutely. Get an insight. I was going to do my own podcast on this, but here we go. Sorry, yaar, here we go. Content चोरी कर. Here we go. No problem. No problem. But and important. Are these changes coming also to Pakistan as well? Because more often than not, we hear things and then it's just like कि हम तो side पे हैं और actually तो वो बड़ी markets पे जा रही थी. Yes, YouTube has started taking Pakistan a little more seriously lately, and this shouldn't come as a surprise क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी market है. Although the economy couldn't be the perfect economy or aspiring economy नहीं है, जहाँ हम होना चाह रहे थे वहाँ हम नहीं है अभी, but regardless there's a lot of people, a young population, और market इन सारी चीज़ों को देखती है और YouTube specially इन सारी चीज़ों को देखता है और कहता है कि hey, potential, what can we do here that we haven't done before? Let's open up Pakistan, let's open up conversation with Pakistan, and let's try to see what Pakistan can bring. And that being said, the one thing that I took out from the entire event is the fact that YouTube Shorts is going to be far more serious than anybody could ever सवाल ही आने imagine. वाला था कि do you think a large part of this sudden interest could be कि पहले वो ऑटो पे बस ठीक है पाकिस्तान मार्केट ग्रो कर रही थी, but suddenly with TikTok really giving them a run for their money, do you think there's that level of insecurity where they're like, okay, listen guys, like थोड़ा सा इनका ख्याल करते हैं? Absolutely. I think, TikTok is such a huge platform now. And the views it drives, the algorithm in general, everybody wanted to copy that. Everybody wanted to see कि यार हम इस तरह का क्या कर सकते हैं कि हम TikTok को compete कर सकें. And I guess everybody just came up with different things. For example, Instagram came out with Reels, YouTube came out with Shorts. Snapchat has its own Spotlight feature now. So it's like endless scrolling is basically what each company wants to achieve, and they want to see कि उनके creators क्या content बना सकते हैं जो कि viewers को on par रखे, on the app रखे, inside of the app रखे, and keep it scrolling. So obviously YouTube had to come out with YouTube Shorts, and
they are investing heavy into it. And not only that, जो लोग भी YouTube shorts बना रहे हैं उन लोगों के लिए revenue sharing भी open होने लगी है अब, ठीक है. starting in Feb. नहीं, so question, and again, you're not the right person to ask this question, probably the YouTube representative, but as a consumer, when I look at YouTube shorts, मुझे बड़ा confusing सी अभी इस वक्त space लगती है, because YouTube generally is a very well managed, very well structured space in a way that it might have all of the trash that it generally any platform has, but वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्रिएटर यूट्यूब नज़र आ रहा है, आपको पब्लिशर यूट्यूब नज़र आ रहा है, आपको पॉलिटिकल यूट्यूब नज़र आ रहा है. Shorts is this really random, you're just scrolling and it's a lot of copy paste content here and there. Do you think the user experience, जिस तरह for example as a creator मेरे लिए बड़ा एक अजीब सा user experience है कि the shorts start appearing on my main role, right? Like I don't want to dirty it up. I have so many podcasts, आप जाते हैं खूबसूरत सा scroll आता है of episodes, and then suddenly अगर मैं shorts डालना शुरू कर दूँ अपने main channel के ऊपर, तो which makes a lot of sense कि मैं shorts डालूँ, a lot more people are going to be interested, but it ruins the user experience. And I feel like a shorts YouTube की तरफ से seems a lot like an emergency reactive, चलो जी जल्दी से product introduce करा दो, not a very well thought out design feature. Yeah, I'm sure that's like a freaking $1 trillion company, if anything. I mean, I'm sure they have thought a lot about this. But I feel like what it really comes down to is what जितने भी products होते हैं ना, they're user driven basically. तो they basically see कि यार लोग किधर जा रहे हैं, लोग क्या करना चाह रहे हैं, लोगों की अगर attention span कम हो रहा है, उसके पीछे क्या स्टैट्स हैं. अगर आप भी देखो, हम लोग 1.5 घंटे की, मैं भी क्योंकि पॉडकास्ट करता हूँ, अगर मैं 1.5-2 घंटे की पॉडकास्ट लगाता भी हूँ, उसके ऊपर रिटेंशन कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर बहुत अच्छी रिटेंशन हो तो वो 20 मिनट, मेरे लिए बहुत अच्छी 18-20 मिनट की बहुत अच्छी रिटेंशन होती है. एवरेज आउट अक्सर 10-15 मिनट पे भी कर जाती है. सो इट गोज टू शो, अगर आप 1.5 घंटे का कंटेंट भी लगा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल वॉच व्हाट दे वांट टू वॉच. दे skim through the parts that they really want to watch, and then they just skip through the parts that they don't want to watch. So at the end of the day, there's a very limited amount of people who podcast really captures. It's a niche, right? It's a niche. Absolutely. The majority of the people are the scroll freaks. Yeah. Including myself. Like, I find myself in that position a lot of times. Like, my parents, I've seen them do this. I've seen my wife do this, that, when we're on the phone, we just keep scrolling. We go like, this is endless scrolling. It never ends, and you never want to end. And that is what YouTube wants to achieve, in my personal opinion. And I think they're going to do it with shorts. They seem like that, but the push is very real from their end. Push is very real. And by the way, they're integrating into your account in a way where you're not even going to... you don't need a second account to upload shorts. You can upload shorts within your account, and it's only going to feature in the shorts tab of your account. अच्छा, so वो वाला जो मैंने प्रॉब्लम बताया वो वैसे सॉर्ट हो जाएगा कि वो शॉर्ट्स सारे साइड पे हो जाएंगे, and then you can utilize that as a great way to feed the audience and then convert some of that to your more long format. There are creators from Pakistan that I forgot the name of, but they showed me some creators from Pakistan. Actually, the most subscribed creator in Pakistan, who's a creator, not a Hum TV or Geo TV. He's 10 million subscribers strong. Pakistan. Exactly my point. Nobody knows about that. Did you know about that? I didn't know about that either. They showed me this guy, I think Hussein or Hassan or something, and he's a shorts creator. Because shorts drive the amount of subscriptions shorts drive, it's insane. Is he doing like VO based clips put together? Yeah, is he doing like legit face first? He's doing I saw a little bit of his content. It's basically like comedy. शक्ल नजर आई थी? आनी तो चाहिए. There are, I think he does these comedy sketches on his YouTube shorts, and I really don't remember his name, but I'm gonna message my YouTube manager. I'm gonna ask him. One second. Hey buddy, what's up? Can you please send me that guy's link from YouTube who does YouTube shorts, who has 10 million subscribers? So the growth is very real there, and that's the next frontier for a lot of creators. I mean, if you just dissect the entire social media evolution, you'll see that it started with Vine,
7-second videos, 6-second videos. Then it just went into Instagram. Then it went to long form content like YouTube videos, vlogs. वो सारा culture एक शुरू हुआ. उसके बाद I feel like we're going back to the Vine era, Right. where people don't have a lot of attention span, and companies have realized कि यार अगर हम if we can quickly provide a lot of dopamine and each swipe to a certain user, that is more profitable for us. Yeah. And that makes us more money. And the February monetizing situation is also going to be live for Pakistan. Yeah, that's the best part. That's the best part. I wish I could say I drove that decision, but I think I have nothing to do with it. I tried to take. मैं बड़ी कोशिश की. मैंने कहा मेरी वजह से. नहीं पहले से उन्होंने decision लिया. मैंने कहा okay, मैं सबको बताऊंगा मेरी वजह से. But yeah, they're bringing it to Pakistan. I'm very happy for that. Very cool, very cool. Chale, I'm gonna switch to our regular programming the way we normally do. I want to have an understanding of really where you were born and where you grew up, and a little bit about your early life. Sure, man. So my name is Shahveer. I was born in Karachi, raised in Lahore. I spent 2 years in Houston, Texas. I've spent more than 15 years in Canada, Toronto. That's a slightly odd transition. I know. Did you guys go for immigration into the US? Did you go for a job and then went to Canada? What happened there? So basically my dad had a business opportunity in the United States, लेकिन वो उस तरह mature नहीं हो सकी जिस तरह हम सोच रहे थे. उसी टाइम पे हमने Canadian visa भी apply किया हुआ था, Canadian residency. हमें वो मिल गई. Right. And So then you we moved moved to Canada? What part of Canada? Toronto. I mean, कहते हैं उसको टोरंटो ही है, लेकिन वो छोटी सिटी साइड पे जो होगी वो सबर्ब टाइप की जो सबर्ब जो है हमारा वो पड़ता था ब्रैम्पटन at the time. अच्छा. We moved there and then now we have been living in Milton for the past 8-ish years. Milton is also a suburb or is it a separate city? Yeah. It's like Gulberg, DHA. I see. That's the distance between the two. How would you compare, if you have any memories, how would you compare US with Canada living wise? I'm sure you've been to the US multiple times ever since, but living एक फर्क होता है ना, culture का फर्क होता है. Yeah, Houston was obviously like season wise these places are like far apart. एक में दबा के गर्मी पड़ती है और एक में दबा के सर्दी पड़ती है. लेकिन I think for what I remember, US के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ह्यूस्टन के अंदर स्पेशली. और वहाँ पे मुझे अभी तक याद है कि हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जिनके साथ हम घुल मिल गए थे और ये लोग फ्राइडेज़ को डिनर्स किया करते थे, बाहर जाया करते थे लोग, बड़ा मज़ा आता था. इन कैनेडा आई एक्चुअली डिड नॉट फील द सेम वे. लाइक मे बी इट्स जस्ट much more closed off. हाँ, आई वुड से सो. Do you think that's also because of एक ये भी फर्क होता है ना कि एक big city versus small? So Houston, do you think it would have been the same if you were in New York? Because वो होता है ना कि बड़े शहर में अपने शहर मुल्क का भी बंदा हो, you just too lot happening. I can't pinpoint what exactly it is, लेकिन US में मुझे मज़ा बहुत आता था. और जब हम लोग नए कैनेडा मूव हुए थे और हमारे 2 साल कैनेडा में भी उतना ही टाइम हो गया था जितना हम लोग ने US में गुजारा था, तो हमने सब ने कहा था कि यार US was way better than Canada. But obviously now we have had our education. अब हमारे childhood friends भी Canada के बन चुके हैं. Community and everything. हाँ, तो अब तो obviously Canada all the way. Extremely hot, extremely cold. What would you choose personally? In terms of my personality? What are we talking about here? We're talking about weather. Okay. Since you mentioned Houston, enter. Sorry. ये आता रहेगा थोड़ी देर में, इस तरह का माइंड ना करना. यार, I would go with extremely cold. उसकी वजह मैं बता देता हूँ. उसकी वजह ये है, cold you can actually block off with like jackets. And heaters. Yeah. यार, hot बहुत चिपचिपाहट, पसीना, 3 सेकंड गर्मी में आप रहो, आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो जाती है. सेंट्रल हीटिंग होती है, आप 15-20 मिनट आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं बाहर के. यार, कनाडा के अंदर you don't even realize it's -50 outside. It's -40-50 sometimes and you don't even realize that. आप अपने कच्चे बनियान में सो रहे होते हो और आपको होता है कि अच्छा क्या बाहर सर्दी हो रही है. और जब आपने अगर गाड़ी से कुछ लेने जाना हो तो उस वक्त आपकी हाथ में आती है थोड़ी सी. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स the way the Canadian society have, my dad is a funny guy. So वो कहते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आती
कि कौन को किसके दिमाग ने इजाज़त दी जब ये अर्ली सेटलमेंट्स हो रही थी यहाँ पे, कौन आया यहाँ, क्या टोरंटो क्यों, -50 क्यों, क्या ज़रूरत थी यहाँ रहने की, क्या काम था इन लोगों को, रेलवेज बिछा दी, ये कर दिया, वो कर दिया. Is there any better temperature within the whole of, I mean I know Vancouver, वो तो काफ़ी दरमियान का अच्छा, It's very tropical. हाँ, Vancouver. तो उसकी बेल्ट के ऊपर और एरियाज नहीं है जहाँ पर, मतलब इट डजंट मेक सेंस, यूर राइट, कि जो सबसे बड़ी सेटलमेंट है वो टोरंटो, विच इज सो फार अप. हाँ, like why did civilization decide that? Like why did people decide कि यार हाँ चलो -50 गुड यार, वहाँ चल के रहते हैं, कपड़े वपड़े बना लेंगे, इग्लूज में रहेंगे, क्यों? तो I don't know, but to answer your question, I don't know if there are more places like Vancouver. I think वो एक certain belt होगी. The thing about Canada is Canada की जो geography है ना, पूरा Canada US के border पे रहता है, पूरा का पूरा Canada. ठीक है. जितना आप नॉर्थ जाते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको पॉपुलेशन कम होती रहेगी. और कनाडा इज़ आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज इट्स प्रीटी स्मॉल, क्योंकि वो स्लिम लाइन पे पूरा कनाडा रह रहा है, आबाद है, जो बॉर्डर यूएस के साथ आपका मैच हो रहा है. Do you think that global warming होगी and all of us will be basically, all of these lands will be unlivable, so we'll go live in Russia and Canada? I really hope everybody comes to Canada. I need more friends there, man. Absolutely. I think that too. And Canada has, I love Canada because Canada is one of the safest countries. And when you factor in all of what is happening with the present day Earth and humans, and we're on the brink of World War III, as a lot of people say, you just feel extremely safe and secure in a country like Canada. And I feel like सब दुनिया के मसले अपनी तरफ, और वो साइड पे आराम से. हाँ, उनके पास पानी भी अपना है, दुनिया का सबसे बड़ा fresh water reservoir, they have it, and they're just genius or blessed, whichever one it is, I don't know. But basics में वो survive कर लेंगे, they're not necessarily. I think Canada is going to be the last country to disappear. I think everybody's going to come to Canada. What about New Eventually. Zealand? New Zealand I also feel like is a very सुकून से साइड पे बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, दुनिया. I haven't been, I don't care. Canada all the way. सही है, मतलब आपने अपने पासपोर्ट को होल Logic पूरा का तो- पूरा आपने वो दिया है कि भाई मैं एलिजेंस रखता हूँ, लेता हूँ तो मैं रखता हूँ एलिजेंस. देखो मुझे पता नहीं ना कौन सा अच्छा, कैनेडियन देख रहा है ये. By the way, this is something that I've noticed, and I have my own siblings who are Canadians. Canadians नहीं छोड़ते वो. मेरे अमेरिकन सिबलिंग्स हैं, उनसे मैं कहूँगा आपका अमेरिका कितना बुरा हो गया, अजीब सा हो गया है, वैसा पोलराइज्ड हो गया, हाँ कहेंगे हाँ पागल है अमेरिका. कैनेडियन सिबलिंग से आप जब बात करोगे ना कि यार कनाडा बड़ा अजीब है, क्यों अजीब है भाई? किसने बोला तुझे अजीब है? there is something there that really makes the Canadian, वो बेशक जॉब के लिए अच्छे पैसों के लिए छोड़ के नेक्टा पे अमेरिका चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर दिल में कनाडा हमेशा रहता है for some reason. यार पता है क्या है, actually again my parents have spoken so much about this to all the kids कि वो कहते हैं कि यार the country has provided so much for us. The government of that country has provided so much. For example, when we couldn't afford food, because I come from a middle class background myself, right? So there were times where we couldn't afford food and the government supported us. These are the things that you look back as a countryman and you go like, okay, yaar, beautiful place, man. Like they really take care of their humans. Agar Pakistan mein mujhe kuch hota, Canadian embassy would be the first one to raise the question. For example, if I get kidnapped or something, right? They'd be like, where's our guy? And they'll come and they'll secure me and they'll save me and do whatever is necessary to protect me. They really, really, really care for their humans. Therefore, you feel responsible कि यार you gotta give back to the community. Like nationalism आपका ना भी हो ना, आप दिल में उन्होंने एक belonging बना दी है ना, क्योंकि because of it's again पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी कम्युनिटीज़ में रखते हैं, क्योंकि उनकी गली के जो खालाएँ होती हैं उन्होंने मुश्किल वक्तों में उनका ख्याल रखा होता है. सो दे कैन रियली बिलोंग. वो जितनी भी अनोइंग होगी ना वो खाला, वो उन्होंने हमेशा मिलने जाना होगा, उनको हमेशा एक अच्छे तरीके से याद रखेंगे. आई फील लाइक इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ दिल में जगह फॉर कैनेडा बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ दिस
कम्यूनल एक कनेक्टिविटी जो उन्होंने रखी हुई है कि एवरीबडी ग्रोज टुगेदर, नोबडी इज ऑस्ट्रेसाइज्ड टू अ साइड. Yeah. They try to balance the society. They try to take a lot of money from the rich. Therefore, all the rich hate Canada. क्योंकि taxes जो हैं Canada के अंदर वो insane है. Like 50% or something is like the tax if you make over 6 figures. But the middle class is so large, and everybody can afford good meals, good place to live at. So yeah, I mean, like I can literally pinpoint the reasons why people love Canada, and it makes complete sense. Yeah, as a 12-year-old, when you move to the US and Canada, I mean that's a very difficult age to move generally. Yeah. Because it can go either ways. आपके दोस्त वगैरह एक sort of बन चुके होते हैं, आपका एक सिस्टम होता है, कल्चर होता है, आप नए कल्चर में जाते हैं, आप एकदम से अंडर कॉन्फिडेंट से हो जाते हैं कि यार यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, किस तरह बोलूँ. पाकिस्तान में तो उस वक्त तो अंग्रेज़ी भी आपने तो हाई स्कूल में जाके अंग्रेज़ी थोड़ी बेहतर होती है. हाँ. So what was that transition like for you? Yeah, I remember my transition was extremely smooth in the US. At the time, I didn't face a lot of racism, honestly. And what school were you in Pakistan? Beacon House. अच्छा. Yeah. Beautiful school. कौन से वाला? Still miss it. Defense campus. जो नया उस वक्त मेरा ख्याल है नया बना होगा. BDC is very recent. पता नहीं, मैं तो बचपन से ही जा रहा हूँ यानी कि अब तो I mean I've been on this earth 28 years. I've known BDC for at least 27. But वही मैं कह रहा हूँ कि because BDC is that a legacy school? इनका जो वो legacy वाले हैं वो तो वो है JT कैंप कौन सा है? लेगेसी स्कूल का क्या मतलब है? जो बीकन जिस तरह बीकन हाउस के ना, जिस तरह यहाँ पे बीकन हाउस स्टार्ट हुआ था फ्रॉम अ गराज एंड देन इट मूव टू अ प्रॉपर बिग कैंपस. और वो फिर कैंपस एक मेन कैंपस है इस्लामाबाद में. देयर इज BMI इज द लेगेसी कैंपस. BMI में अब ये सीन है कि BMI के ग्रेजुएट्स के बच्चे BMI में पढ़ रहे हैं. ओह. You know, and then you have Beck जो कि comparatively recent है. You have Potohar campus and so on and so forth. तो वो अब मतलब सेकंड जनरेशंस आना शुरू हो गई हैं और वो ग्रो करना शुरू हो गई हैं. बट एनीवेज, सो BDC जो ये मेन DHA के अंदर जो है ना, राइट, Y block वाला. एंड सो द ट्रांजिशन इन द US wasn't that bad. No, actually I felt like I repeated a lot of stuff that I studied already last year. It was really smooth and हाँ, transition culture shock बहुत बड़ा था क्योंकि वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता. आप जो आपका दिल करे वो कपड़े आप पहनाओ. एक और जो मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज चीज़ थी वो ये थी कि टीचर्स को आप टीचर नहीं कहते, आप उनको मैम नहीं बोलते, आप उनको उनके नाम से पुकारते हो. मिस्टर जेम्स, मिस ग्रीन, यानी ये उनके अगर नाम है तो आप उनको नाम से पुकारते हो. एक और चीज़ ये थी कि वहाँ पे PDA बहुत देखने को मिला, पब्लिक शो ऑफ अफेक्शन, डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. I saw a first makeout that I ever saw in real life was in the school, and I was like, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं लोग? और ये पता है, ये first day, in fact जब हम लोग जैसे ही हम लोग funny thing, my dad, my younger brother and me, हम लोग गए हाई स्कूल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराने, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर एक लड़का लड़की लगे हुए थे. और मेरे डैड ने देख के कहा वेलकम, वेलकम टू अमेरिका बच्चों. आई मीन that's part of their culture, so you just gotta be like, you can't do anything, and that's how they're just open-minded like that. And to me that was mind-bogglingly crazy. I'm like, यार इनके पेरेंट्स को कोई बता देगा तो लेकिन to them it's just a norm. It is what it is. हाँ, I saw it in my so there was like a couple teacher, and multiple times I saw them, you know, greeting each other with like cute small little kisses के I'm going to this, I'm going to that. And I was like, यार ये कैसे, क्या यानी कि इनकी respect नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? But yeah, I was an awkward kid. I was an extremely awkward kid. मुझे इस culturally fit in होने में थोड़ा सा time लगा था, because I was so shy that there was like a time when I remember this girl, she really liked me, and to me that was like, तू पागल हो गई है यानी कि तेरा दिमाग ख़राब है. और वो गोरी थी, ठीक है. तो उसकी एक दोस्त है, उसने मुझे आके कहा कि you know she really likes you and she's gonna come talk to you tomorrow in the lunch. मैं स्कूल ही नहीं गया उस दिन.
मुझे था कि मेरे से लड़की आके बात करेगी, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना शाय लड़का कौन सी ग्रेड में ये हो रहा था? यार आई थिंक दिस वाज इन ग्रेड 8 मिडिल स्कूल होगा या ग्रेड 9 होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, but it was just insane. It came to a point where, you know, the next day when I went to the school and I saw like these two girls walking, उसकी दोस्त और वो खुद भी वो दूसरी साइड से वॉक कर रही हैं और मैं अपने दोस्त के साथ वॉक करके जा रहा था. मेरा दोस्त का नाम जुरेज था उस वक्त. तो I was walking, I wasn't having a conversation with, but I saw them coming from really far away. तो मैंने ना उसके साथ फेक कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर दी, जैसे मैं बिजी हूँ. मैंने कहा हाँ तुझे पता ना, वो कहता तू क्या बात कर रहा है यार तू चल. एंड एज वर क्रॉसिंग पाथ विद दीज टू गर्ल्स, आई नो दैट वन ऑफ देम लाइक्ड मी और वो उसकी दोस्त रोकने की मुझे कोशिश करेगी. उसने मेरा हाथ पकड़ा रोकने के लिए कि शावीर इससे बात तो कर लो, और मैंने उसका हाथ यूं छुड़ाया है कि मुझे टच नहीं करना. यानी कि मैं ऐसे उस इतना बेचारी शाय था. लड़की का जो क्या दिल दुखा होगा उसको. तो ये लग रहा होगा ना कि ही हेट्स मी. हाँ, उसको लग रहा होगा कि या तो ये मुझसे नफरत करता है, हाँ. और ही इज नॉट इनटू गर्ल्स, हाँ, ये भी हो सकता है. और ही इज अ साइकोपैथ. क्योंकि उनके कल्चर के अंदर ये एक नॉर्मल affection or showing your love for somebody is like completely normal. It's not like how you perceive it over here at all. It's I feel like that's how they really, that's the system, right? That's the social structure through which they find couples for themselves. The other यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत है. यहाँ पे couples आंखों में बातें करते हैं. For example, like अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाए स्कूल में, मुझे याद है मेरे सारे दोस्त यानी कि बस समझ आ गई बस वो, और उनके लिए वो जिंदगी उनकी बन गई है. लाइक उनका था कि यार आई हैड द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ बिकॉज शी ब्लिंक्ड एट मी, यू नो व्हाट आई मीन. शी सॉ मी, आई कांटेक्ट डेवलप हो गया 1.5 मिनट के लिए. आई थिंक शी इज इनटू मी ब्रो. बट ओवर देयर इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. वहाँ पे यू नीड टू, you go out on dates, you have to be with somebody. If you're with them, you're holding hands in the school. It's completely different. So that was a culture shock. Have you seen Korean dramas? Thank God, no. I know. You'd recommend me I'd recommend to watch you one. them. Really? Just one. Which one? Crash Landing on You. आपने अपनी बेगम के साथ देखना है. Heavy. क्या है? ठीक है. It's a Korean drama. 12-16 episodes का है. ठीक है. अच्छा मैं सिनॉप्सिस नहीं बता रहा. ठीक है. Okay. कोरियन ड्रामास का सीन ये होता है, लव स्टोरीज होती हैं. ठीक है. बहुत चीज़ी होती हैं बट बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं बिकॉज उनका ये वाला सीन होता है. तो जो हमारा पाकिस्तानी प्यार है ना, मैं इस तरह से बताता हूँ. हमारा हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो मेरा एक दोस्त आया, उसने आके मुझे बोला मेरी गर्लफ्रेंड है, बड़ी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाई. 8 साल से हमारा सिस्टम चल रहा है, ये है वो है. मैंने कहा यार ये तो पक्के पकाए सिस्टम है ना पूरा. एक दिन उसने आके मुझे बताया, वो टेक्सटिंग कर रहा था उसको. तो मैंने कहा कि यार रात के 12 बज रहे हैं और तुम क्यों इस तरह से करो, व्हाई डोंट यू कॉल हर. उसने कहा कि मैंने तो कभी उसको कॉल किया ही नहीं. आई डोंट नो व्हाट शी साउंड्स लाइक, शी डजंट नो व्हाट आई साउंड लाइक. ओह गॉड. तो मैंने कहा तुम 8 साल से लाइक हम, बट यू राइट कि आंखों आंखों में प्यार चल रहा है और दोनों तरफ से चल रहा है. सो मेरे लिए बड़ी ऑड सी बात थी उसको देखकर. एंड जब हम पाकिस्तानी उसको देखते हैं तो जाहिर है हम एक और एवरी टाइम दैट वी इन द मीडिया व्हेन वी सीन relationships more often than not, अब जितने भी लिबरल हो जाओ एज अ पाकिस्तानी, हम स्टिल वो awkward हैं अंदर से, राइट. सो हमारी रिलेशनशिप्स हमारी वो एक सर्टन बाउंड्रीज के अंदर ही ऑपरेट करती हैं. हम बेगम के साथ बाहर जाए ना, दुबई शुबई जाएँ तो वहाँ पे भी यूँ हाथ रखेंगे तो 2 सेकेंड एकदम से वो होता है कि अच्छा नहीं हाँ मैं दुबई में ही हूँ, चलो ठीक. जो एक है सिचुएशन मेरी है. बट क्रैश लैंडिंग ऑन यू जब मैंने देखा, वैसे इट्स अ ग्रेट स्टोरी, इट्स अ सुपर क्यूट शो, बट उनका भी इश्क हमारे जैसा है. यार उन्होंने 5 एपिसोड्स बनाई हैं लिटरली, जबकि वो जाके उनका जब हाथ मिलता है ना तो वो उस हाथ को इतना जिस तरह उन्होंने डायरेक्ट किया है कि यू रियली बिगिन टू रियली इमेजिन दी ओल्ड टाइम्स जब बटरफ्लाईज आती थी, बिकॉज आप टच होता था आपके मुझे फील आई है. अब अमेरिकन हाई स्कूल ड्रामास में क्या हो रहा है, अच्छा यार बात की नेक्स्ट सीन बेड. It begins to feel very disconnected कि यार ये क्या है, ये नहीं हो रहा है ऐसे. Like there's a lot more that goes on into a relationship. There's a lot of these butterflies and connections and watch Crash Landing on You. I recommend it to everyone. मेरे हमेशा 100 out of 100 score आया. Everybody who hated Korean dramas or the ideas of them really loved them. Sure. अच्छा कोरियन ड्रामा का मेरे दिमाग में दूसरा सवाल मेरा ये था कि डू यू थिंक
ये बड़ा पाकिस्तान में होता है कि यार ये बच्चे बाहर जाते हैं ख़राब हो जाते हैं एंड यहाँ पर एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज की बात आ रही है. हाउ डू यू थिंक ऑल ऑफ दिस इम्पैक्टेड यू? Did just because, oh my god, you saw a couple of people making out in America, which was a very normal cultural phenomena for a different set of people, did that screw you up? Or in the longer run, how did that shape you and your understanding of different cultures? How did that shape your own identity as a Canadian Pakistani Muslim? Yeah. I think I learned this very early on in my life that to judge somebody based on their culture or based on their opinion is not the greatest trait a human can have. In fact, it is something that you should not have. You shouldn't judge anybody based on whatever their मीनिंग फॉर लाइफ इज़. हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है, अपना कल्चर होता है. फॉर एग्जांपल हम लोगों को लगता है कि जो गोरे हैं अगर वो शो ऑफ अफेक्शन करते हैं और पीडीए करते हैं और वो उनका कल्चर है और इस चीज़ में उनको खुशी मिलती है, हमारे लिए वो बेशर्मी है हमारे कल्चर के हिसाब से. देयरफॉर हम उसको लेबल कर देते हैं बेशर्मी से. अंडरस्टैंडेबल. लेकिन अगर वही लोग आपको देख के आपको अगर वो बैकवर्ड्स कहते हैं तो फिर आपको वो चीज़ भी माइंड नहीं करनी चाहिए. अगर वो आपको कहते हैं कि आप ओप्रेस्ड करते हैं औरतों को तो आपको फिर वो चीज़ भी माइंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप करते हो या ना करते हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वक्त 1800s में जिंदा हो. क्योंकि दुनिया इवॉल्व हो रही है. मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है और हम गलत हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ हम सही हैं वो गलत हैं. मैं ये कह रहा हूँ हर बॉर्डर्स ने ये कर दिया कि सोसाइटीज़ बना दी हैं और उन सोसाइटीज़ ने अपना अपना कल्चर डेवलप कर लिया एवोल्यूशन के थ्रू ओवर टाइम. अगर आप 5-6-7 हज़ार साल पहले चले जाओ तो ये जो आपकी कम्युनिटीज़ होती थी जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में अभी भी रहती हैं, जो क्या कहते हैं उनको, अनटच्ड ह्यूमंस जो होते हैं, जहाँ पे जब आप उनको जाओ तो वो पत्ते पुत्ते पहन के घूम रहे होते हैं. देयर लेडीज डोंट हैव एनीथिंग अप, लाइक उनका टॉप तो उसी तरह एम्प्टी होता है. उनके अंदर बेशर्मी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है वो बेशर्म है. दैट इज हाउ दे लिव, दैट इज देयर कल्चर, देयरफॉर दे शुड नॉट बी जज्ड फॉर दैट. आपको पता ही नहीं उनका बैकग्राउंड क्या है. तो मैंने सबसे पहले ये रियलाइज किया कि जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम मी and just because their culture is completely different from me, therefore they don't deserve my judgment. I mean, I shouldn't be able to judge them in a negative manner. So I pulled myself aside from that. Whether or not that affected my culture, I don't think so. I think if anything, it just broadened my approach towards difference of opinion. And I feel like the more you travel around the world, I actually recommend कि अगर आपके पास पैसे हैं या आपने कुछ चीज़ अपने लिए प्रोडक्ट खरीदना है या एक एक्सपीरियंस खरीदना है, हमेशा एक्सपीरियंस खरीदो. बाहर जाओ, दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट करो, देखो जाके कि लोग किस तरह रह रहे हैं, उनका खाना किस तरह का, उनकी लैंग्वेज किस तरह की, वो किस तरह की बातें करते हैं, उनका रिलेशनशिप्स किस तरह के वो चलाते हैं. इससे आपका दिमाग ओपन होता है थोड़ा सा. you gather more information about humans that are not you or not like you, and therefore I think it's really good for your own evolution and your brain building. And yeah, I mean, like I just realized the more I travel, the more I become open-minded, and I stick to my culture and my religion. It's close to my heart, but I don't judge anybody based on theirs as well. And I don't allow anybody to judge me based on my beliefs. वो एक framework है ना कि at the end of the day you have to define that framework. If you begin to say कि for example I see that contradiction in framework a lot. पूरी दुनिया में आजकल तो polarization इतनी ज़्यादा है, but for example हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें चीज़ें बैन कर देनी चाहिए because वो हमारे कल्चर से adhere नहीं करती. बट हम कहते हैं कि फ्रांस को पर्दा अलाउ करना चाहिए. आप एक पॉइंट पे आ जाएं, या तो आप कहें कि यार मैं पाकिस्तान को अपने स्टाइल से रखूँगा, फ्रांस जो भी करता है फिर वो उनका कल्चर है. That's hypocrisy. हाँ, या आप कहते हो कि यार फ्रांस को भी नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं करना चाहिए, हम सबको रहने देना चाहिए है ना. हमारे मुसलमान वहाँ पे पर्दा करके उनकी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं, ना उस जो आप जिस चीज़ से आप डिसएग्री कर रहे हैं वो लोग जो भी कर रहे हैं वो करके आप डिस्ट्रॉय होंगे. हाँ, right? So exactly. So the framework has to be the same. It has to be rationalized
कि आप जो भी आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहे हैं. कॉन्वर्सेशन का मैं थोड़ा सा वापस लपेटता हूँ. कैनेडा, राइट? सो व्हाट ईयर इज दिस व्हेन यू लैंडेड देयर? I think 2010. राइट. शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2010 ही था शायद, 2009 या 10 था. Tell me about the experience growing up there. I think वहाँ पर आपकी community, like जो ये Zaid and Sham and all of these, were they also in Toronto? Yeah. We lived 30 minutes away from one another at the time. Acha. And did you guys know each other before the whole content situation? Nope. No idea. I was शाम और जैद तो क्रिएटर्स थे पहले से. These are the Facebook days. Yeah. ये जब बिल्कुल नया वाइन आया था ना, तो उसके बाद एकदम Facebook रेवोल्यूशन आई थी. यानी ये जब Facebook पागल हो गया था, हर बंदे को Facebook अकाउंट चाहिए था. तो उस वक्त आई रिमेंबर शाम एंड जैद वर इनटू Facebook, एंड एट द टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग सीरियस अबाउट इट. और मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स थे Facebook पे, फॉलोअर्स जो भी थे. और उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई, और वो मैंने देखा कि जैद भाई ने वीडियो उठा ली हमारी. तो जैद भाई ने एक वीडियो बना दी. उस वक्त जैद भाई लेजेंड थे. तो मैंने जैद भाई को ना गुस्से से मैसेज किया. मैंने कहा, जैद कमीने, तुमने मेरी वीडियो चुराई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट लेकर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. अच्छा, full 15-year-old rage into, like, not 15, I don't know how old I was at the time, maybe 18, 19, I don't remember. Surprisingly, Zaid responded. And he responded with love. He said, yaar, dekh, I'm sorry, and I'll make it up to you. Where do you live? And he asked for my address, and he just showed up. And he's like, we'll make a video together. And we made a video. I remember I made a video with Zaid for the first time. And that video ended up getting like 300,000 likes. Likes? उस वक्त views नहीं आते थे नज़र Facebook पे, खाली likes आते थे. I'm sure it had been more than 10 million views or something. Overnight, I felt like a phenomenon. Like overnight, I felt like, and at that point, although I was manifesting a lot of things. I believe in manifestation. I believe in, have you read The Secret? I haven't. The book? I haven't. You haven't. It's about thinking of things happening and them happening. Yeah. I know all about that theory. I haven't read that particular book. Yeah. So I was manifesting this entire collaboration with Zaid since I started making videos, and it had to happen, and it happened this way. And I think that was my first real push. And then from that point on, I never looked back. And then I think I met Sham right after that, if I'm not wrong. उसको भी इसी तरह Facebook में मैंने मैसेज किया हुआ था, and he probably noticed me as well, and he replied. And then ever since then, शाम और जैद मेरे दोनों बच्चे हैं, क्योंकि वो इतने क्यूट हैं. वो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं. और मेरा घर जो है वो बिल्कुल बीच में आता है उन दोनों के घर के. तो फिर मैं अक्सर उन दोनों को बुला के कहता हूँ, यार चलो यार, अपनी गल्ला करो यार, अपनी गल्ला करो. It's okay. Are you guys all the same age? No. I think Zaid and I are the same age roughly, but Sham is a little older than us. Acha. Yeah. Why do you think there's so many breakouts from Toronto? That's a very good question. And surprisingly, it all happened in the same town as well. I mean, 30 kilometers radius के अंदर 3 Canadian YouTubers उठ गए. उस वक्त पाकिस्तान की representation YouTube और Facebook content creation में, पाकिस्तानी देसी content creation में from Pakistan side, खाली हम 3 ही थे at a certain point. And then a lot of people joined. A lot of people came after that. But I actually don't know the answer to that question. And I wish I knew. कि बड़ा इंटरेस्टिंग है फिनोमेना कि दुनिया के किसी और सेंटर से इतना बंदा नहीं निकला. पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ बहुत जगहों पर हैं. लंदन से नहीं निकला इतना बंदा, न्यूयॉर्क से नहीं निकला. Perhaps it was also that we kept connected to each other, and then we built this competition, this healthy competition between one another कि यार उसने वीडियो बनानी है तो मैंने भी बनानी है. And that just kept us moving forward. And it came to a point where we got so big that nobody, I guess, tried to ever compete with us because they're like, these guys are too big or something. I don't know. Like, maybe I'm just talking nonsense at this point, but that's
ज़ाहिर एक perspective the होता है ना, only that's your- way I can हाँ. explain this कि why did nobody else come from anywhere else? I think Dhoom Bros were really big at one point as well. Doom Bros तो I think OGs हैं in a way that Yeah. before Absolutely. anyone else, views now most a lot of people might not know them. मेरा generally ये होता है कि यार जो जितना पुराना है उसकी respect बनती है. वो तो OGs हैं, वो तो YouTube के टाइम के ऊपर क्या कुछ नहीं कर रहे होते. Dhoom Bros YouTube के दिलीप कुमार हैं basically. वो उन्होंने ये idea दिया. I think Zaid और ये लोग Zaid शायद उनके बाद आया था. I'm not entirely sure about the timeline. धूम ब्रोज कर रहे थे, धूम ब्रोज के साथ जैद की एक दुखी कोलैबोरेशन वीडियोस आई थी, कोई वॉलमार्ट में वीडियोस उन्होंने की थी. फिर जैद ने सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट करके अपना करने की कोशिश की. वो यूट्यूब पे बड़े कर रहा था, बट वो यूट्यूब का एक तरह इट्स अ बिट मोर स्लो एंड स्टडी. फेसबुक रियली रेवोल्यूशनाइज द होल क्रेजी वायरल सिचुएशन. एंड सो मुझे याद है कि जैद एंड धूम ब्रोज वर सिमिलर, आपको नजर आता. और दोनों बड़े उस वक्त एक्सप्लोरेटिव से थे, डिफरेंट एरियाज में चीज़ें ट्राई कर रहे थे ऑन कंटेंट. एंड देन Zaid came on Facebook and the rest is history वाली बात है कि वो just went into another direction altogether. Yeah. When you started content, what were you in high school? Were you in Yeah, at the time I was in high school. कौन सा year? Was in I think this was grade 11 maybe, grade 11 or 12 when I really started getting serious about content creation. I remember it's like a motivational story. I've told this many times, but I think like your audience can hear it too. Of the power of manifestation. मुझे और ये इसमें एक चीज़ भी झूठ नहीं है. So I have no reason to lie about this, but a lot of people can take away from this great things from this. मेरे ना 3,000 followers हो गए थे Facebook पे, और मुझे चाहिए थे 100,000 followers. गोल था. एक सेकेंड. No, I'm wrong. मुझे चाहिए थे 10,000 followers. Right. 3,000 followers मैंने एक साल की मेहनत के बाद लगाया. जाके मैंने 3,000 followers कमाए थे. मुझे था कि यार एक साल हो गया, और ये November 1st हो रही थी. November 26th को मेरी बर्थडे होती है. मैंने कहा I don't know how, but I have to get to 10,000 followers by my birthday. I have to. Now this is, I know these numbers are stupidly small at this point in this day and age, लेकिन back then this was a huge everything, deal. yeah. क्योंकि 3,000 followers लगाने में मुझे एक साल लग गया था. मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, but I have the next 26 days to make it into a reality. And I swear to God, on the 26th of November, 12 o'clock, जैसे 12 बजे ना, 12:05 मुझे आज तक याद है, मैं 10,000 followers हिट किया था Facebook पे मेरी बर्थडे पे. I don't know how it happened. मतलब सही मैजिकल स्टोरी है ना कि it was insane to me at the time. That was my first exposure to manifestation. That was the first time I realized कि अगर मैं कुछ सोच सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ. उसके बाद there are like everything in my life. The collaboration with Mahira Khan, the collaboration with Atif Aslam. I mean, nobody else from YouTube has gotten the opportunity to until now, I think. But and in fact, collaboration with Sham and Zaid, I still remember, I know this is like gonna sound really funny, but I used to take showers, and in showers I used to think of these ideas of different videos and different concepts in my head. And at the time I had like 11-12 हज़ार मेरे followers होंगे Facebook पे, और Zaid के उस वक्त million plus Facebook पे थे, और शाम के भी इतने ही कुछ थे. और मैं सोचा करता था कि यार ये लोग मेरे से करीब ही रहते हैं. somehow I'm gonna meet them and this is the idea I'm gonna pitch them and this is the video I'm gonna do with them. और मैं नहाते वक्त literally imagine कर रहा होता था कि हम ये शॉट ऐसे लेंगे, ये शॉट ऐसे लेंगे, ये शॉट ऐसे लेंगे. और उसके ठीक 2-3 महीने बाद वो एग्जैक्ट चीज़ हुई. मैंने जैद के साथ कोलैबोरेट किया. However it happened. शाम के साथ कोलैबोरेट किया. उसके बाद there's a video I made in 2017. Atif Aslam came to Canada for a concert, and I went to his concert and I got the last seat in the 40,000 audience stadium. And Atif Aslam को मैं दूर से देख के हेलो किया. जाहिर सी बात नहीं देखा होगा. I was like shit, yeah. I came back home that day, I remember, and I was like, I manifest today that in 3 years time I'll collaborate with Atif Aslam. I manifest that today. And I made a video about this. I made a vlog. I uploaded that on YouTube. It's still on YouTube. I said कि आतिफ भाई आप आज आए यहाँ पे, inshallah one day I'll meet you, and that day is not far. And 3 years time there's an opportunity that came my way. This brand reached out to me. They said hey, we want you to make a video. I realized that on that brand
the panel of their artists had Atif Aslam, and I said, hey, listen, if you don't give me any money, but you give me Atif Aslam for a video, I think that would be like a fair deal. They said, no, we'll give you money, but we'll try to get Atif too. Is that the one gadi wali jo thi? Yeah. And Atif bhai us waqt Dubai mein the. And I remember Velo reached back to me and Velo said ke Shahveer, Atif bhai has agreed to do your video and he's flying from Dubai to do your video. And I was like, holy shit. It's like, you're inconveniencing him for this? Bro, to me, Atif Aslam is the biggest star of Pakistan, right? Of course, 100%. And he is our Shah Rukh Khan. And I was like, there is no way this is happening. And I swear to God, the moment Atif bhai pulled in with his, wo choti si Corolla mein baith ke aaya tha, because obviously he didn't want to, I guess he was avoiding like big car ताकि लोग पीछे ना लगे या जो भी है पता होगा आता था. So he was in a Corolla driving himself and he looked at me and I was sitting in a Fortuner just waiting, camera ready, सब कुछ. मैंने पूरी script तैयार थी and Atif bhai looked at me and he did this to me. I was like, okay, I don't remember what I'm doing here. I have no idea. But I look back to that and I go like, yaar, everything in my life that I have manifested thus far has become a reality. And the goals are larger and they just keep getting bigger and bigger. And the power of manifestation is that once you can imagine yourself doing something, imagine yourself doing something great. If you can imagine it, you can get there. All you have to figure out is how to get there. And it sounds easier said than done for every single person who's laying in their bed with a plate full of chips on their tid and they're eating it, कि यार ये मैं ऐसा नहीं होता है यानी कि आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, होता है. बहुत लोगों को करते देखा है, मैंने खुद किया है. सवाल है, you when did you make your first video? At what age? Okay, come, scratch that. Oh no, I remember. Okay. I remember that. I think my first ever video was basically my dad had left for Pakistan. We were in Canada, and it was his birthday, and it was me, my mom, and my brothers with me, and I was the eldest one. So I made like this one video for my dad. Not montage. It was like a very interesting video. It was like POV from my dad's point of view, coming from work to home and how everybody wished him happy birthday. Oh, interesting. And it was like a 15-minute video and I captured that कि वो office हैं और वो गाड़ी चला रहे हैं and the way he gets out, फिर वो अपनी ऐनक लगाते हैं, रसाला पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने capture की. My dad saw this and my dad was like, good direction, and he showed it to everybody in my khandan and everybody's like, holy shit, you're really good. And that was like my first dopamine hit. Yeah, that I entertained people. What? That can be done. And that was the first time I kind of got an idea of what the value of video creation really is. What age was that? 14, 15? Ish. Achha, counter question. When did you get the idea of manifestation? Did you read a book? Were you introduced by someone about it? No, I think it just happened accidentally because it made me feel good, the fact that I'm seeing myself in positions that are attainable but not easily. And I feel like the fact, even to this day, I go out on walks alone and I think about all the things that I want to be. And those things give me so much dopamine and they're so good for my brain and I just get really happy. मैं खुद ही कह रहा होता हूँ यार good सीन है तेरा bro, तू best है bro. यार ये यहाँ तक पहुँच गया क्या शाहरुख खान के साथ collaboration. But what I'm trying to get at is in Pakistan, more often than not, I think before manifestation comes the ability to dream. Dream hoti hai na, dream open ended hoti hai. I'm a dreamer. I don't know if it will happen to me, but I'll dream about it anyways. A lot of kids that I meet, और मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा यार, what do you want to be? अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए, कुछ मुफ्त में मिल जाए, क्या मिल जाए, they're just blank, they're blah. It's like उनकी डायरेक्शन, उनका सब कुछ काट दिया गया और उनको एक डब्बे में बंद करके कहा है कि बस अब तुम ना सफोकेटिंग तरीके से इसी तरह जीते रहो. And which is one of the reasons why you find a lot of them coming on social media and being very aggressive as well. They're not aggressive at you. They're aggressive at the circumstances that they're in because they've been put into a box that they can't breathe. And so
I feel like it's an evolution and it's a very important evolution. अगर आपने if you want बड़ी बात करते हैं ना हमारी यूथ बहुत बड़ा है, हमारा तकदीर बदल जाएगी, यूथ बदलेगा तकदीर. यार misguided youth or unguided youth is still an irrelevant youth, to be very honest, and can be more damaging. अच्छा, गाइड करने का मतलब क्या है? मैं नहीं आके ये कहूँगा कि आप डिफ़ाइन करना शुरू कर दें, अगेन एक डब्बे से नया डब्बा बना के उसमें डाल दें. आई थिंक अगर आपको रेनेसांस चाहिए अपनी यूथ में तो आपको उनको सबसे पहले ख्वाब दिखाना पड़ेगा कि यार ख्वाब देखना सीखो. चूज़ टू बिलीव दैट इंटरेस्टिंग थिंग्स कैन हैपन, maybe even if you think it's not happening to you. And then the next step is manifestation, कि if interesting things can happen, they can happen to me as well. Do you think growing up, did you ever feel like कि बस ठीक है चलो चल रहा है एक निज़ाम है, and then eventually as things progressed and as you began to get these experiences, your dreams just sort of, जो बैरियर्स थे वो बस कटते गए कि यार ये भी हो सकता है, तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर मैं ये भी कर सकता हूँ. एक पॉइंट आता है इस पर आप you really, बचपन में हमें कहते थे शूट फॉर द स्टार्स, कभी समझ नहीं आई. अब आती है कि यार हमने तो नहीं सोचा था कि हम जो कर रहे हैं वो ये कर पाएंगे, और जितने लोगों ने आगे पीछे लेफ्ट राइट खप डाली थी कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बट अब वो बट सारी खत्म हो गई हैं. राइट. सो हाउ what are your thoughts on this entire situation? Yeah, Eminem said it very nice. He said, shoot for the moon, you'll land amongst the stars. I mean, try to get up there. You'll get somewhere, is basically the message behind that line. You said unguided youth is a destructive force, and I completely agree with it. I feel like uneducated youth is a liability, not an asset for anything. I mean, just imagine yourself in a household जहाँ पे अनपढ़ बच्चे बड़े हो रहे हैं. Do you really think they're going to change your fate for your household, for your family? They're never going to be able to do that because they don't know how to think to begin with, right? That being said, number one, I forgot your question. Question was number two, it wasn't necessarily. I have no idea what we're talking about. All I remember was you saying unguided youth is destruction. That's it. I was like, हाँ इस बारे में बात करनी है. I think you've already given me the answer. It wasn't a question per se. It was just your thoughts on कि हमारे यूथ को पहले हमें ख्वाब दिखाने पड़ेंगे और फिर हमें मैनिफेस्टेशन दिखानी पड़ेगी. हाँ अच्छा, हाँ ख्वाबों के ऊपर ना मैंने एक चीज़ और भी शेयर करनी है आपसे. मुझे याद आ गया, आपने सवाल पूछा था कि did you read upon something that gave you that motivation? And the answer is actually yes. I have always hated reading books. I'm not a reader at all. So I started listening to books because I realized one thing. And this is not very early on, and I wish I realized this early on in my years, is that, dude, reading or listening to books is the best thing you can do to yourself. You have no idea the potential. Imagine एक इंसान है, और स्पेशली बायोग्राफीज, मैं बायोग्राफीज के अलावा और कुछ नहीं पढ़ता, मैं सक्सेस स्टोरीज पढ़ता हूँ, बिकॉज दे गिव मी द एबिलिटी टू ड्रीम व्हाट दैट पर्सन ड्रीम्ड. I read Steve Jobs, I've read Elon Musk's biography, I've read Imran Khan's Pakistan A Personal History biography, and all of these books shaped the dreamer in me. And actually it really goes back to like the first instant, if I could remember, it was the thought of dreaming got instilled in me after I watched 3 Idiots, the film. That film alone sold me on dreaming big. Really. That just struck a chord with me. It stayed in my head for a very long time. I realized there's a system, and in order to break through the system, you cannot be a realist. I don't feel realists are any good for society. I don't think you should be a realist. I think everybody should be a dreamer, and I swear to God, this world would be a different place. Everybody who has done something big in their lives they were dreamers. They were not realists. They never looked at a situation and go like, oh yeah, shit, this is not possible. Also, I hate the idea of plan B. I don't believe in plan B. I think you should only have plan A, because if you have plan B, you always have a cushion to fall back on. I think that in itself is a weakness. I don't think nobody should be able to. If you're going for something, dude, get it. Don't come back without getting it. I think that's the attitude people should have. लेकिन ये सारी conversations जब मैं अपनी cousin सुंदस के साथ करता हूँ, sometimes on my podcast,
वो मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है, क्योंकि उसका भी एक पर्सपेक्टिव, जेन्युइन पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन है. वो कहती है नहीं देखो शावीर, तुम बात कर रहे हो फ्रॉम प्रिविलेज पोजीशन, तुम बात कर रहे हो कि तुम कनाडा में थे, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी, अगर तुम जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो तुम्हें एक्चुअली कहीं जॉब मिल जाएगी. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट द बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम, dude, I remember working 2 full-time jobs, well, 1 full-time, 1 part-time, and going full-time university. I remember those days, and in that schedule I fit in making videos. I remember the time it would be snowing and I wouldn't have money to take the bus to go to school, so I would wear boots and I would wrap myself with like saran wrap around my jeans so baraf jeans ke andar na ghus jaye. And walk to school, which was 15 minutes. I remember the time coming back from work at 1 a.m. Well, 11 a.m. को मेरी शिफ्ट, अगर 11 p.m. को मेरी शिफ्ट ख़त्म हो रही है या 11:30 ख़त्म हो रही है, तो अगर 11:45 वाली बस मिस हो गई तो अगली बस आएगी 12:45 and it's -30 outside and I don't have enough money to buy an expensive jacket, so I have the jacket that I have, and then I'm waiting 1 hour in freezing cold, and by the time I get home my eyebrows are frozen, and then I have to wake up 5 in the morning to go to school, and then come back from school at 3 p.m. and go to my work, and in the midst of all of that I have to make a video. I have seen those days, what I'm saying, and I have seen those days where I became popular. And I was working at this store, it's called Popeyes now, and before that I was working at a pizza shop, and then I also worked as an Uber driver. In all 3 instances I was popular enough where people would come and take pictures of me. In one instance I was literally cleaning a toilet, and a fan spotted me and he's like, oh Shahveer, and I was cleaning Popeyes ka toilet, and they come and they take a picture with me. In the other instance I was driving an Uber, and every single time a Pakistani or an Indian would accept the car ride, I'd be like, oh shit, they might know me. And they would in most cases know me. And they'd be like, oh my God, they're losing their shit. And they go, oh, Shahveer. I'm like, जाना किधर है आपको? और वो तो पीछे भी नहीं बैठते, वो तो आगे आके बैठ जाते हैं सारे, you know? उनके अंदर नहीं है वो कि हम बड़े लोग हैं तो हम ऊबर में पीछे बैठेंगे. नहीं, वो आगे आके बैठते हैं. एक दफ़ा मैं पोछा लगा रहा था पिज्ज़ा स्टोर के अंदर, and fans recognized and they came in and they took pictures with me. So I've seen those days. What I'm saying is, just freaking be a dreamer. There's nothing, there's no great joy than actually dreaming something and actually achieving it. I think in a lot of ways, when I listen to the privilege conversation, while very warranted in a lot of areas, a lot of people are beginning to discount real hard work on the basis of privilege. Privilege की conversation बड़े different context में आई थी, और वो ये आई थी कि यार एक businessman है, उसके अब्बा जी की फैक्ट्री है, उसके अब्बा जी की फैक्ट्री के अंदर बेटा बाहर पढ़ने जाता है, वापस आता है, डायरेक्टर लग जाता है, और अब जाके वो अपने बिजनेस की सक्सेस स्टोरी बेच रहा है. वो प्रिविलेज है, उसने खुद कुछ नहीं किया. बट अगर एक बंदा जो है ना, वो अपना जो जहाँ से वो आया है वहाँ से वो ग्रो कर रहा है, दैट इज़ नॉट प्रिविलेज, क्योंकि वो उसमें रिलेटिव होगा. साफ सी बात है. आप हर उस पर चले जाएँ. मैं आज कंटेंट इंडस्ट्री को उठाता हूँ, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे मशहूर लोग हैं, अप एंड डाउन है, सारा कुछ है. पब्लिक स्कूल के भी लोग हैं. आई हैव स्पोकन टू ऑन माई पॉडकास्ट, आई हैव स्पोकन टू पीपल जो कि लिटरली गाँव से निकल कर आए हैं. आपसे पहले मैंने भी बात की अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से. डू यू नो अबाउट हिम? No, can you please tell me? He's the former Minister of Commerce. Okay. He is the founder of Descon. It's his family. So this is a Gujarati family. We're born in he's 80 years old now. He was born in... you did a podcast with somebody who's 80 years old? 80 years old. Amazing. Yeah, and he came from the Indian state of Gujarat. एक गाँव से वो आए थे. Partition के बाद कुछ भी नहीं था उनके पास. वो बस partition के बाद यहाँ पर आ गए. यहाँ पर उनकी फैमिली ने एंग्रो बनाया. उनकी फैमिली ने वो बिज़नेस बनाया जो कि आज फातिमा फर्टिलाइज़र है. They were one of the biggest textile barons at one time. Descon, which is Pakistan's largest engineering company, but now is also one of the region's largest engineering company and has done a lot of work in the Middle East and has offices in 12 different countries. वो उन्होंने बनाई. अब लोग आके बोलें कि जी वो प्रिविलेज थे. यार उस तरह के हज़ारों लोग आए थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, हर किस्म के बैकग्राउंड से हैं. आप एंड डाउन है, विलेज फूड सीक्रेट विलेज में कर रहे हैं, आप कनाडा में कर रहे थे. आई थिंक व्हाट आई ट्राई टू सी इज़ नॉट कि यार आप किधर से आपकी रेस स्टार्ट हुई.
कि बस ये इतने यहाँ पे तो मेरे से आगे से स्टार्ट हुई यार. अगर आगे से स्टार्ट हुई तो कितना आगे गया, उस पॉइंट पे कितने लोगों ने स्टार्ट की. मुझे लोग आके कहते हैं कि यार आप बीकन हाउस, मैं बीकन हाउस से ग्रेजुएट किया. तो इफ समवन फ्रॉम अ पब्लिक स्कूल इज लुकिंग एट मी, दैट लाइक ओ यू नो आप तो प्राइवेट स्कूल से स्टार्ट किया. मैंने कहा यार मेरे प्राइवेट स्कूल में बच्चे हिरोइंची भी थे, उन्होंने अपनी तबाह भी की है पूरी ज़िंदगियाँ. उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि देर जस्ट डूइंग रेगुलर जॉब्स. They're not earning as much, they're not connected as much, then they haven't in terms of that, and I'm sure they're happy maybe, but the point is that you don't nullify a person's achievements, but not only that, you don't nullify the idea of dreaming based on the privilege, because dream की हाइट शायद फ़र्क हो सकती है रिलेटिव के ऊपर. बट जो गांव का बंदा है शायद उसकी ड्रीम ऑनेस्ट टू गॉड ये हो यार मैं शहर जाके एक दिन बाबू बनूंगा, एंड ही कैन बिकम दैट बाबू अगर वो ड्रीम तो करे ना यार. Starts with a dream. Yeah. You're absolutely. I mean, yeah. That the point I guess we are both making for the past 20 minutes is that you have a better chance of success if you learn to dream, rather than just being like, yeah, this is my situation and this is how it's going to be. Yeah. You have a higher chance of achieving something only if you can envision it in the first place. Yeah. Lekin, you know, all of that being said, I also feel that dunya, it's not fair. Sometimes you are just born in a situation where you can't do anything. For example, you are born in a gaon, and from, let's say, how do I say this without sounding ignorant? Acha, you are born in a situation where your family responsibility, and this is the point I was making earlier, that Sundas brings these types of conversations to my attention, the other side of the story. She goes like, you're born in a situation where you have a family of 10, your dad beats your mom on a daily, you at the age of 13 are pushed into begging, or anything, or any work for that matter, because begging is now it's an industry, it's handled by different people. How do you excel from that point on? I mean, like, obviously you cannot say a person who had an opportunity of going to a public school, a private school, definitely has a better starting point. उसकी बेस बेहतर है. या एक मिलियनर है जिसने अपने बेटे को यूएस भेजा पढ़ने के लिए, चाहे उसको पैसा नहीं भी दिया लेकिन उसको एजुकेशन दी, उसको एक्सपीरियंस दिया, उसको ड्रीम करने की एबिलिटी दी. तो आई थिंक मैं इसमें डिफरेंस पता क्या लेकर आऊँगा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ योर ओनली कॉम्पिटिशन इज विद योर सेल्फ, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग रिलेटिव. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी डू इज वी टेंड टू बी लाइक, ओके, इफ अ व्यूअर इज वाचिंग एंड ही इज लाइक आई वांट टू बी अ यूट्यूबर, and he begins to make a goal, I want to be like Shahveer Jafry and I am going to be Shahveer Jafry. Yeah, I think that's a wrong goal. I think the context is different. I think if he says, okay, I want my voice to be heard, it's an entirely different dream altogether. Right? It has to be contextual as well. Like I mentioned, आपने दोनों की मिसालें दी. देखें, आपने इसमें मुझे जो कोर फ़र्क नज़र आया ना वो पैसे का आया. मोर ऑफन देन नॉट हम प्रिविलेज में पैसा निकालते हैं, क्योंकि पैसे वाले भी बाप अपना एल्कोहलिक हो सकता है, माँ को मार सकता है, ठीक है. वो मैं जानता हूँ लोगों को, पैसे वाले लोग थे, माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया, बच्चे 12-13 साल के थे, कुछ समझ नहीं आई, सीमिंगली कंफर्टेबल फैमिली थी, यू नो हाई स्कूल तक पढ़ा, अच्छा वो क्या पूरी दुनिया को देखा, ये तो प्रिविलेज है, बाहर निकाल दिया, 1 रुपया भी नहीं था, शायद चलते हुए थोड़ा सा जेवर ले लिया, एंड देन दे रियली हैड टू वर्क हार्ड टू गो थ्रू यूनिवर्सिटी. एंड यूर पब्लिक के फेस में वो ये था यार ये तो यू नो प्राइवेट स्कूल ग्रेजुएट्स, एंड देन उसके बाद यूनिवर्सिटी भी अच्छी की. आई थिंक अगेन वो जो आपने गाँव वाली मिसाल दी, 13 साल की बच्ची वो करके बेगिंग कर रही है, that's just the worst example, and I would empathize enough to not be tone deaf to say that that should also dream. But generally अगर पैसे की बात आती है ना, a lot of other things notwithstanding, इमोशनल चीज़ें जो हैं वो ट्रामेटाइजिंग होती हैं, और वो आई अंडरस्टैंड. पैसे के मामले में मुझे नहीं लगता, वो मिलियनेयर ने अगर अपने बेटे को भेजा है बाहर, उसने एजुकेट करा दिया, तो उसका कंपटीशन उसके साथ है और उसके तरह के लोगों के साथ है. एंड हाउ वेल ही परफॉर्म्स इज डिपेंडेंट ऑन हिज ड्रीमिंग. वो अगर फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क का बड़ा शोर समझता है, वो जी उसका तो बड़ा प्रिविलेज था तो उसने जाके कर लिया, तो यार और कितने, लाइक हिज डैड ओन्ड अ फ्यू माइंस,
there are thousands of the people all over the world who own mines. You know how many of them actually made a rocket ship or made self-driving cars? Yeah. And do you compare Elon Musk to a kid from, let's say, Laya and say कि यार वो arid agriculture university से graduate करके, you know, why aren't you more like Elon Musk, you stupid shit? Yeah. No, I guess the right way to put this is that there are examples from both sides of the spectrum where extremely privileged माँ बाप जो हैं वो बहुत ही बिगड़े हुए और अनसक्सेसफुल बच्चे पैदा करते हैं और इन सम केसेस बहुत ज़्यादा अनप्रिविलेज्ड लोग कुछ ऐसे जीनियसेस पैदा कर देते हैं जो कि जाके दुनिया चेंज कर देते हैं. मैं वो नहीं कह रहा, बट द एक्सट्रीम्स ऑन बोथ एंड्स is what matters. When you take out the ratio na, obviously a person with a better education has a higher rate of success than a person अगर उसमें flat उसमें देखो, अगर आप ratio देखो, Absolutely. and majorities जो होती है ना वो change करती है दुनिया. For example, Elon Musk is on a mission to make as many babies as possible because literally in his book he mentioned that there are too many dumb people having babies and that is not good for the evolution of humanity because we are gonna be dumber as a nation. So I know I'm a genius. He said that. Said that. And obviously he's a genius if he's not an alien. That I think I'm a genius and I need to have as many babies as I possibly can because that is gonna be good for this upcoming society. हो सकता है एक उनमें से कोई आइंस्टाइन दोबारा निकल आए. You know what I mean? So I guess that is also important. That is also very important to have but the privilege is definitely real. Yeah. Absolutely. I mean, like, can you discount the fact that you and I are not extremely privileged right now? You know how I see this situation? There are only 700,000 famous people in the world. Yo, for you guys too, listen to this, very important. There are only 700,000 famous people in the world. Really? That's how I reacted when I found out. In the age of TikToks and... हो सकता है बढ़ गए हो. चलो 10 मिलियन हो गए. 10 मिलियन 10 लाख 10 मिलियन हो गए, ठीक है. 1 करोड़ बंदा फेमस है. कितने लोग हैं दुनिया में? 8 अरब. Where do you land? On top of that, if you have a roof over your head, they say you are better than 50% of the world or 75% of the world in some cases. Yeah. Right? If you have clean water to drink, you're better than 80% of the world. Yeah. Where exactly would you place yourself in this lucky spectrum? Sometimes you're just born lucky. You're born a human. That's lucky AF. You could have been born as an ant. Think about it for a second. मैं पागल होता हूँ इन चीज़ों को सोच के. You know, there are more ants. If you were to take all the humans and you weighed them, and you took all the ants and you weighed them, the ants would weigh higher. Really? जी, that's how many ants there are. इतनी चूंटियाँ हैं दुनिया में. That is a weird. That is 250 चूंटियाँ मर गई. Weird trivia to know. I'm just saying that there are trillions of species, living things, and yet you are a human being with the ability to think intellectually, intelligently. You are amongst the fame kinds. You're amongst the ones who have clean water to drink. You're amongst the ones who have a roof over their head. How, if this is not a dream or a simulation, I don't know what is. but देखें इसमें the chance, if coin flip हो ना और हमारी पोजीशन में अगर आना हो 1 in a trillion chance, 1 in trillions हो कि ट्रिलियन दफा टेल आएगा और एक दफा हेड्स आएगा, वो चांस आ गया. पता है मैं प्रिविलेज को किस तरह से देखता हूँ? मैं हमेशा इस तरह से देखता हूँ. I don't use privilege as a way to make excuses for myself. I use privilege as a way to practice gratitude. ठीक है. Probably जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि more often than not I see people who always look at those above themselves and they say I can't do what I can't do because of them, because वो तो मेरे से बेहतर हैं. So case closed, book बंद, मैं बैठ गया. Privilege का conversation बड़ी real है. It's a very legitimate thing. मैं क्या करता हूँ? I don't look at the ones above me because there are so many people above me. At the end of the day, अगर मैं कहूँगा तो मेरे human mind की comprehension के हिसाब से तो मैं hundreds of thousands निकालूंगा. वो मेरे से ज़्यादा अमीर हैं, वो मेरे से ज़्यादा ये हैं, मेरे से ज़्यादा वो हैं. But I try to look those जो कि मेरे से कम हैं. Yeah. Honestly, और you know, we did a video on this as well. आप पाकिस्तान में भी लेकर आए ना, दुनिया तो बहुत ही वसी है. आप पाकिस्तान में लेकर आए, मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ, आपने हमें प्रिविलेज बोला ना, मेरी एक बंदा, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान में टॉप 5% में नहीं आता.
मेरा एक भी बंदा, मैं आज गारंटी लगा के देता हूँ कि और आपका भी जो व्यूअर है वो टॉप 5% का मतलब आपको पता है क्या है? 10-15 मिलियन पीपल बनता है. Yeah. But do we think that? We don't, because we're not looking at the bottom quartile. We're always looking at कि वो चाचू दुबई में उनके पास गाड़ी कितनी अच्छी है, वो मेरे स्कूल का सबसे अमीर तरीन बच्चा है, उसका क्या सीन है. Yeah. And so we're constantly feeling bad about ourselves, and we're being fed to feel bad about ourselves. Yeah, and you go on therefore these guilt trips. हाँ. For just being successful. हाँ. नहीं मैं ये नहीं कह रहा. Sorry. नहीं, as in वो के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, we are being guilt tripped. not being able to think about. As a creator, I'm being guilt tripped. मैं as an individual कह रहा हूँ कि we are forced to make ourselves like, हमें बस बुरा फील करा के कि यार तुम तो बेचारे वो हो, लोग अमीर हैं, and you're forced to not even try Yeah. to be better. Because जब आपको अपनी privilege का हर इंसान को एहसास होता है ना, तब जाके वो कहता है यार आपने जब बोला ना कि पूरी कायनात में खरबों स्पीशीज एंड खरबों लिविंग उसमें the chances of you being a human being with an intellectual mind and an अशरफुल मखलूक़ात, यार उस बात को ही सोचकर मैं सोचता हूँ कि आपके I don't care आपके क्या circumstances हैं, आपको फिर भी हाथ पाँव मारने चाहिए. Absolutely. Because आप जानवरों से बेहतर हैं, आप चूंटियों से बेहतर हैं. Yeah. You know, so as long as the Do you believe that? Do you believe we're better than animals? Do you believe humans are better than dogs, heart-wise? I do, yes. Really? I think inherently we are. I think Dogs don't kill each other, man. If you take a dog and if you beat it black and blue, Yeah. and you starve it, Yeah. you're going to have a very rabid dog. Yeah. If you take care of a dog with love, Yeah. you will find the most loving species on the planet. I would like to do the same to humans. I think it's. Have you ever pet stray dogs? I have, and they become really. जब मैं वही कह रहा हूँ ना, उनको प्यार मिलता है ना, वो यूं flip करते हैं. मैं ये कह रहा हूँ as a species, it's the hardware, right? So as a hardware, you have the most advanced hardware. आप उसके ऊपर घटिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दोगे ना, तो even the best processor is going to be useless. Right? Yeah. The fact is कि आपके मतलब आपने ये बात की कि आप अपने लोगों को देखते हैं, और मैं पाकिस्तान में देखता हूँ, just some of the things that I hear, some of the inhumane things that I hear, and then I hear people defending them, and it just breaks my heart, and I realize I try, कभी कभार आपको बड़ा दिल करता है क्या जाहिल लोग हैं, और फिर कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यार इनकी तो गलती नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी है ना, एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर तो इनके ऊपर इंस्टॉल किया गया है कंसिस्टेंटली. So to answer your question, I do believe human beings are, they're just, it's unfortunate as a society, the cards that we've been dealt with. I guess, man. I just don't believe that. I think dogs are much better. Not that I want to be a dog, because dog is also looked down upon in our society. Culture. Yeah. तो मैं उस अंदाज़े से नहीं कह रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुमसे बेहतर तो कुत्ता ही है. But if you were to keep a dog, which breed would you keep? I have a dog. Which one? Golden Retriever. Yeah, I'm not a dog person. Really? Not at all. Really? Okay. But I wanted to get one for my son, because every dog person that I've seen who's grown up with a dog has a beautiful personality. That's a very, very, very good क्या कहते हैं उसको, analysis. Yeah, realization. think about it. That's very true. Yeah, You know, I agree with it. There is a certain level of emotional intelligence that comes with sort of having a companion like that. And I was so it's interesting that you mentioned, because मेरे दिमाग में मैंने बड़ा research किया था अपने हिसाब से. Obviously, like dog owners are very उनका एक different experience होता है, but मैं पहुंचा था golden retriever पे for a 3-year-old when he gets 3. Do you think that's a good choice? Beautiful choice. I don't think there are better dogs than golden retriever, period. I think they're the best children dog ever. They're the best dogs ever. I mean, the love a golden retriever or lab has is just insane. Just pull out like golden retriever with babies videos. I have now, and I bet you'll cry at the end of watching them. Like they're so caring. And it's phenomenal because you don't really imagine them to be emotional on that level. They're fairly emotional. Yeah, and the way they changed their physical movement with the baby versus with you is
different. They realize that this is a fragile thing. Yeah. This is not equals to that. This is fragile. This is a baby. I gotta be more precious with this little one. And I think to me that is just, you're right about the emotional intelligence part, that dogs have some crazy emotional intelligence. And how difficult is it to keep one? I mean, I know that you're moving around all the time. You're fairly busy. Do you have one in Pakistan or in Canada? Yeah, no, I have one in Pakistan, and my brother has one in Canada as well. So how does that we're work? like a dog family. Hamara, I have, whenever I'm moving, I make sure there's somebody here who takes care of the guy. But in most cases, I'm just here. I mean, एक्सरसाइज वगैरह चाहिए होती है उसको बहुत ज़्यादा सारी. उफ मेरा वाला तो है ही मेंटल ना, वो तो उसको मैं कहते ही मेंटल, उसको मैं कहता हूँ मेंटल, इधर आ. वो तो पागल है. वो तो if he saw you ना, he'd literally come and just sit on your lap. And he's a big guy. He thinks he's this big, but he's not. He's huge. And he doesn't want to believe that he's grown up now. He's a year and a half now. He doesn't want to believe that. He believes he's still a little baby and he wants attention all the time. And is he an indoor dog or an outdoor dog? Outdoor dog. Achha. My wife would kill me. Otherwise, that dog would be... If I didn't have a wife, I would have a dog. Inside the house. Makes sense. Shahveer, I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 60-minute mark. But I'm going to ask you one question. Generally, I ask all of my guests. And I want your insight on that. You spent a fairly large part of your life early on in Pakistan. Then you guys moved to Canada, US and then Canada. वहाँ पे ज़ाहिर आपके different experiences थे. Eventually reverting and choosing to be back in Pakistan. ज़ाहिर है कि आपका एक बड़ा डिफरेंट सा स्कोप होता है. एक तो बाहर टाइम गुजारना, बट एक फॉर्मिडेबल ईयर्स में टाइम गुजारने से ना आपको एक बड़ा डिफरेंट फाउंडेशन बनती है, जिसके बाद जब आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है. Knowing that experience, knowing all of what you've been able to understand in the past, 3-4 years since you're here? 3 years. 3 years. And now, living here with your wife, you're essentially settled in a way. How do you see Pakistan 28 years from now, in 2050? Damn. Yeah. Agar, think about it, take your time, but... Yeah. होता है ना, एक बंदा देखता है, इर्द चेंजेस देख रहा होता है कि यार मुझे मैक्रो लेवल के ऊपर लोग किस तरह चेंज होते नज़र आ रहे हैं, पॉलिटिक्स किस तरह चेंज होती नज़र आ रही है, अगर आती है, इकोनॉमिक्स किस तरह चेंज होती है, दुनिया किस तरह चेंजेस आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान क्या किरदार रख सकता है. यू जस्ट केम बैक फ्रॉम गूगल सिंगापुर. वहाँ पर द आइडिया दैट दे आर टेकिंग पाकिस्तान सीरियसली सडनली. Can they do that? ये भी हो रहा है. So all of this put together, the positives and the negatives, what's your image of Pakistan? Dude, that's the problem with being a dreamer. You always hope for the best. You always envision the best. I think, look, the thing is, saying that, we are a beautiful country and we have the best people and we have the best government and best economy. Obviously, everybody knows, everybody will see through the bullshit and they'll be like, सही सच बोल, कैमरे पे डरते हो तुम लोग सच बोलने से क्योंकि हेट मिलेगी. That being said, I know the problems, I know the issues. I don't discuss politics in general. I think you'll never get the message across because there's always two sides to a story and everybody wants to hear their side. I feel like अगर हमारे मुल्क में, और मुल्क से मेरा मतलब है अगर हमारे लोगों में acceptance आ जाए ना, acceptance of ideas, कि अगर यार ये बंदा है ना, ये बंदा ऐसा है, लेकिन है तो इंसान, अच्छा है, खूबसूरत इंसान है, इसको मैं इंसान की तरह रिस्पेक्ट दूंगा, चाहे इसकी ओपिनियन से मैं अग्री नहीं करता, चाहे मेरे बाप ने कहा है कि ये इंसान की ओपिनियन गंदी है, लेकिन एज अ इंसान मैं उसको इंसानी दर्जा देते हुए उसकी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ. अगर हमारे अंदर ये चीज़ आ जाए ना, I think we will turn around so fast. And in 28 years, there will be another Muzammil and Shahveer podcasting and talking about how there's a new 150 floor high rise that is being built in Lahore. Yeah. I hope that day would come. And I really freaking hope that, all the pundits and the analysts are wrong about the default situation of Pakistan. And I really hope we turn around, man. But I think it begins with the people. They are not the best right now. And they gotta be...
I think a lot more introspection is needed in all of us. For sure, man. 100%. Thank you so much for coming in, taking the time you're out. I know welcome, that you had a early morning flight and so thake bhi honge, but you know, thank you. No, thank you for so much for having me. And by the way, now that we're signing off, the first thing we spoke about was the shorts, right? Yeah. So I just want to say the name of the guy is Salman Numan. With the 10 million subscribers. I shall check him out. Check him out. Should. But yeah, thank you for coming in. Thank you so much, man. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद है आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं. ट्विटर पे कैंसिल ना करें. इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे. यूट्यूब बढ़ेगी ज़्यादा लोगों तक कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे. आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे. TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशन भी देते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. तो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जैस के साथ आप तैयार हो गए. इफ यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम 1 rupee to as much as you like. It's a thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.